All right. So, what are we learning today? I'm not going to tell you right now because if I say right now, then it will become too boring. So, what are we going to do today is we'll first find out the ratios of certain things and then we'll start doing what are we doing today. So, uh, अर्श प्लीज अनम्यूट करके बोल दे भाई मेरे को समझेगा नहीं तूने जो लिखा है सर वो एस्टिमेटेड वाला वैल्यू नहीं पता चला सेशन में उन्होंने उस पे सर आपने कहा था ना वो पूछने मैम को। हाँ, तो उन्होंने कैसे लिया तो बताया नहीं तुम उन्होंने लोगों को। नहीं, उन्होंने तो उसमें कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने तो उसको बोला कि एस्टिमेशन से अपने हिसाब से के आजू बाजू का परसेंटेज ले लेंगे। उन्होंने एग्जैक्ट नहीं अच्छा बताया कि क्या परसेंट पे लेंगे। चलो मैं कुछ ट्राई करता हूँ मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है या प्रीतम यू वांटेड टू से समथिंग। सर उन्होंने फोरकास्टिंग के बारे में बताया था कि एक कोई फॉर्मूला है जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं तो तो वो फोरकास्टिंग का एक्सेल का। फॉर्मूला तुम्हें याद है। हाँ सर, फोरकास्ट डॉट टीएसटी करके है। तो उसमें वो मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट ईयर है वो हम मेंशन करना पड़ेगा। फिर जो पास्ट डेटा है उसके साथ पास्ट का जो डेट रेंज है वो हमें देना पड़ता है, तो फिर हमें वो डेटा मिल जाता है। चलो वो है एक वे एंड वो एक अप्रोच है बट लेट्स गो एंड ट्राई टू फिगर आउट समथिंग एल्स। आज का दिन मैं फोरकास्टिंग के लिए नहीं रखा था आज का दिन मेरे क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिलेड चल रहा है मैं 2 हफ्ते से पीछे चल रहा हूँ। तो आई नीड टू कंप्लीट सर्टन थिंग्स विथ यू विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वेल especially when it comes to ratio analysis and especially when it comes to calculation of numbers and how an investment banker or an investment firm will lend money to anybody. So that is why I have this. So as I said, I won't teach directly the numbers. So total assets, working capital by total assets, how much it will be. So I have my working capital as 20 lakhs if I'm not, and total assets as 20 lakhs if I'm not wrong. So that's it to 20 lakhs here divided by 1 crore. So what is this answer coming? If you want, I can just do one thing. Just give me 1 second, please. I will share with you this formula so that you don't have to worry. Not the formula, but this sum to your group. I shall share this sum with your group. Okay, MSC Finance. The sum is in front of your eyes. Please check it out. Please check it out. Everyone, देख लीजिए आप लोग सम को अच्छे से। और इसमें मैंने ये भी तक नहीं बोला है कि व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू यूज। I haven't shared with you what formula I'm using. I'm just keeping on going on doing this sum. Working capital by total assets, 2 crores divided by, sorry, 20 lakhs divided by 1 crore. How much is it coming to? 0.2 if I'm not wrong. Yes or no? 0.2 divided by, uh, किया तो इतना ही आ रहा है दृष्टि? Is it coming this answer? Is your answer coming this way? I have already shared the sum. Please go ahead and check. And if you can, is it possible? If it is possible from your end, please unmute and speak with me because I'm finding it very difficult to see the chat box. As I've said, I won't take much time. I want you to answer. The next part, B part, is nothing but retained retained earnings by total assets. So what's my retained earnings? Retained earnings is 30 lakhs if I'm not wrong. Not habitual to writing in this way. 30 lakhs divided by, Yes, say, sir, 1 it's CR. coming the same. Oh, wonderful. Thank you so much. How much is this coming for, sir? Okay. Anyone else? I don't want only Drishti to answer. Others can also answer. 0.3.
Yes. 0.3. Others who are attending, please answer also. 0.3. Chalice. C point. EBIT divided by total assets. Total assets. Can I get my answer for this? EBIT 15 lakhs divided by 1 CR. What's the answer coming? EBIT चा आंसर का ये तो है 0.15 ये तो है काय Yes, 0.15. sir. That's wonderful. Next, let's take D point. Market value of equity by book value of liabilities, total liabilities. So how much is it coming? What's the market value of equity? 80 lakhs, if I'm not wrong. Yes. 80 lakhs divided by book value of total liabilities 50 lakhs. So what's the answer coming for the same? 80 lakhs divided by 50 lakhs. What's the answer coming? The last is E. 1 crore 20 lakhs. If I'm not wrong. By 1 CR. So it's come to 0.1. Okay, 0.16. This is coming to 0.16. And what is this coming to? 1.2, if I'm not wrong. Right? सर और 0.16 कैसे आएगा? सर 80 वो divided by 1.6 50. है, 1.6 आएगा ना? 1.6 है वो। 1.6 आएगा. हाँ, not 0.16. 1.6 आएगा. Yes. Okay. Got it. Got it. चलिए. क्या किया हमने ये? कुछ तो किया है हमने. We have done something over here. Now, whatever we have done, this is a method which is quite important for a term called as ABCDE. A term called as, जो मैंने last lecture में Altman Z Score, which was developed in the year का formula निकाला है, developed in the year 1968. This was removed by one gentleman called as Alfred or something like that. His name was, and he had developed this Altman Z score for the benefit of a lot of people to understand, and especially for retail management, for bankruptcy हो रही है तो उसको कैसे रोक सकते हैं on that, and to find out the financial stability of a company. Usually, this score is for the Altman score is for the manufacturing companies because it is to understand that are they into manufacturing companies के लिए होता है so that they don't run into any kind of problems and things. And what did Altman Z score or Altman's Z score ही बोला जाता है इसे? Z का नाम है I think chi-square is what Z test ना या P test. P test and chi-square test is one and the same. If I'm not wrong, just give me 1 minute, please. No, there's something different. Sorry. So Z score was developed by Alfred. I don't remember his full name. I shall share with you. And he said this score will help to understand the bankruptcy whether it's going to happen or not. And for this purpose, the scores were developed. And what was these things and how do we calculate it? So
the score goes like this, that the Z score is equal to, so here, so Z equals to 1.4 A, 1.4 A plus 1.2 B, 1.4 A plus 1.2 B plus 3.3 C plus 0.6 D plus 0.6 D 0.6 D plus 1.0 E. This is what he developed, which means मैंने तुम्हारे लिए ABCDE तो कैलकुलेट कर चुका हूँ कि वर्किंग कैपिटल कितना है पॉइंट, सो इसका 1.4, सो Z equals to 1.4 multiplied by 0.2, which you had got the answer, plus 1.2 multiplied by 0.3 of B, which you got the answer, plus 3.3 of C. So what was C? C was 0.15. 0.15 plus 0.6 multiplied by what was D? D was 1.6 and plus 1.0 multiplied by E, which is 1.2. So what is the answer that you are getting? If you want, you can just calculate it. It's a very simple thing, or I shall share you the link for the same. Now, here's my Z score, which I have shared with you. So can you get me the final answer? Z equals to how much? 1.4 into zero point 0.2 कितना होगा? 1.4 into 0.2, how much will it translate to? 0.28 if I'm not wrong. Yes, sir. If I'm not wrong, मेरे को पता नहीं है, तुम लोग जो बोलोगे मैं लिख दूंगा भाई. नहीं यार, 0.28 नहीं आ रहा है, 0.24 आएगा. 1.2 into 0.2, 0.24, sorry, not 28. 0.24. कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने. Sorry, this is not 1.4, this is 1.2. 0.2A, this is 1.4B, 1. So this is 0.24 plus 1.4 into 0.3 कितना होगा? 1.4 into 0.3. Yes, Dishank, you are writing something. 1.4 into 0.3.42. Okay, perfect. 0.42, 3.3 into 0.15. 3.3 into 0.15. How much is it coming? So, Shank is writing. Shank is writing. 0.49. 0.49 plus 0.6 into 1.6. Unfortunately, मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर नहीं है. 0.6 into 1.6 comes to, I think point कितना होगा? 64 शायद नहीं, 64 तो नहीं होगा.
Ritam, how much it comes to? 0.6 into 1.6. व्हाट्स सर? 0.6 into 1.6 करो यार, कितना आ रहा है? 0.96. 0.96. And last वाला 1.0 into 1.2. 1.2. 1.2. So what's the final answer? Z equals to, add up all these things, 0.24, 0.42, 3.315. 3.315. This is the answer coming. Now, what did Altman said about it? Now, the question is, 2.7 से ज्यादा there है, should हाँ. be some 3.315. ऑल्टमैन ने कुछ तो कहा होगा, ये 3.315 आया, तो उससे पता क्या चला सर? आपने पूरा, ये तो बहुत सिंपल था। पीजी लेवल पे तो यही तो देखना है कि आपको 3.315 से ज्यादा होना चाहिए कि कितना होना चाहिए, और व्हाट डज इट इंडिकेट? So what did यस सर. Altman Z Score taught, or what did he say? Because finally it is all about understanding that whether your company is entering into bankruptcy or not. And for that purpose, this is what Mr. Altman provided. A higher Z score indicates a lower probability of bankruptcy. It doesn't mean that bankruptcy नहीं होगी. Bankruptcy होनी है तो कैसे भी हो सकती है. At the time of, you can go and check when Anil Ambani's firm ADAG Group did it went into bankruptcy or not. The Z score, what it was. The Z score was how much it was. So any bankruptcy, generally a Z score about 2.99 suggests that the company is in a safe zone, while a score below 1.81 indicates a high risk of bankruptcy. Now, this is what he did it. What should be your questions and what should be your understanding out of it? Your major understanding should be out of that, sir. Why did I take 1.2 of A? Why not 1.4 of A? Why not 1.5 of A? What was the reason that it was 1.2 of A? Anybody who knows it? उमेश, क्यों ऑल्टमैन ने ये 1.2 ऑफ ए, मतलब 1.2 ऑफ ए का मतलब है वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स, क्यों लिया 1.2? उसका बेंचमार्क इंडेक्स क्यों 1.2 ही था, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स? व्हाई नॉट 1.5? व्हाई नॉट 3.5? व्हाई ओनली 1.2? एनीवन हु नोज दिस थियरी? रिटेन अर्निंग्स क्यों 1.4 लिया सर? क्यों एबिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इज 3.3? मतलब जब मैं 3.3 टाइम्स बोल रहा हूँ ना ऑफ माई वट एवर एबिट कम्स, उसका 3.3 टाइम्स। मार्केट वैल्यू क्यों मैंने 0.6 रखा है? मार्केट वैल्यू बाय बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। व्हाई नॉट समथिंग एल्स? व्हाई नॉट दिस? व्हाई नॉट 0.6 को मैंने 1.6 कर दिया डी का? क्यों ऐसा? क्यों ऑल्टमैन ने ये इस तरह से सम्स किए थे उसने? क्यों उसने ये वैल्यूज निकाली थी 1.2, 1.4, 3.3, 0.6? ये क्यों निकाली थी? What was the logic? What was the reason behind it? Why not something else? What made him do these things? Can anybody tell me? बस पसंद आ गया था उसे सर ये नंबर्स 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1। बस उसे पसंद आ गए थे। और इसमें तो कोई फिबोनाची भी नहीं लगा है कि वो मैथ्स का गणित लगा ले और फिबोनाची से कर ले, क्योंकि फिबोनाची तो इसमें लगा ही नहीं है। तो फिर ये स्कोर क्यों लिया गया? Why did he opted for such kind of scores? The reason was, again, the reason comes and boils down to is something called as research. When he took this amounts, or when he was uh, bringing out these amounts, what he had taken was, he had done all the public listed companies. Generally, these formulas have been revealed on public listed companies. What Altman did was, during 1968, he went and tried to find out that those who are public listed companies, whose chances are there to going bankrupt? Which companies के chances बढ़ जाते हैं of going bankrupt? What are the main ratios which a company needs to find out to, say themselves that they are not going to go bankrupt? And that is where working capital came into picture about total assets. Retained earnings का मतलब है कि कंपनी के खुद के पैसे कितने हैं,
On that basis, it went into finding out. The next was EBIT, and that is why it gave more weightage to EBIT 3.3. And what they had done was he made a coefficient correlation between all the listed companies players. I will not be able to, if you are not able to understand what is coefficient covariance, basically सेम कंपनीज के बीच का एक कॉमननेस हम देखने की कोशिश करते हैं. जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसमें कोएफिशिएंट कोवेरिएंस निकाल के हम चेक करते हैं. थोड़ा सा रिसर्च वाला पार्ट है यहाँ पे कि दीज कंपनीज को हमने चेक किया. तो उसने चेक किया था और उसने बोला कि ये जो कंपनीज है ना उसका 1.2 टाइम्स हम इसको दे सकते हैं. For example, I can allocate the in short, it's just nothing but standard ratio. कि whatever मेरा वर्किंग कैपिटल आएगा उसका स्टैंडर्ड को मैं 1.2 से मल्टीप्लाइड करूंगा, रिटेन अर्निंग्स को 1.4 से करूंगा, एबिट को 3.3 से करूंगा और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय टोटल डेट्स को मैं 0.6 से करूंगा. I will give those weightage only and one weightage will be given to sales by total assets. Only one का weightage दिया जाएगा sales by total asset because it will not give me any return, any additional things. And that is why these weights were given to Z score के लिए. And based on that, this was revealed. And so a higher the ratio of Z score, the better chance that your company may not. It doesn't mean that it will. It may not go for a bankruptcy. I'm sure many of you have heard about too big to fail companies. Right or wrong? टू बिग टू फेल कंपनीज के बारे में सुना है तुम लोगों ने, बहुत बार सुना होगा, मेरे ही मुंह यस से सर। सुना yes sir. होगा. टू Yes. बिग टू फेल कंपनीज होता क्या है कि भाई ये कंपनी कभी फेल हो ही नहीं सकती है. और बैंकिंग सेक्टर नहीं। के अंदर आरबीआई एवरी ईयर के 3 बैंक्स निकालती है जिनकी स्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है. RBI has been removing this stability test for past 4 to 5 years. I think so 4 to 5 years से निकाल रही है. जब कोविड थोड़ा सा कम होने लगा तो 4 साल से निकालना शुरू किया था. This previously it was taken by Fed in US. Federal Reserve इस तरह से निकालता था. फिर आरबीआई ने निकालना भी शुरू किया ये बताने के लिए कि भाई अपने को भी करना पड़ेगा कुछ ऐसा काम. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज कि आरबीआई के पिछले 4 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में ओनली 3 बैंक आ रही है. एसबीआई ऑन वन ऑफ द टॉप बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक. ये 3 बैंक्स में जो अब तक कभी जो आई है आरबीआई के नेट में, दे आर कॉल्ड एज नॉट फेलिंग बैंक्स. दे वोंट फेल व्हिच मींस इन शॉर्ट दे वर टू बिग टू फेल बैंक्स. फेड बहुत सालों से निकालता था और फेड की लिस्ट में नॉन बैंकरप्ट में सबसे टॉप मोस्ट एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था एआईजी, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप, जो इन 2008 के क्राइसिस में बर्बाद हो गई. सो जो मैं स्कोर्स दे रहा हूं, दीज आर फॉर ग्रेट फॉर नंबर्स. किसी मूवी में मैंने एक डायलॉग सुना था जो मैं यहाँ पर भी रिपीट करता हूँ, दैट स्टैटिस्टिशियंस आर मेड टू फूल अदर्स. सो डोंट गो व्हाट बाय नंबर्स व्हाट आई गिव यू. You need to understand your perception also. If I go and give you a penny stock, will give you probably 5.5 का शायद से आपको Z स्कोर दे देगा, लेकिन एक पेनी स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या होगी. यू कैन योरसेल्फ गो. मेरा काम होता है कि तुमको सिर्फ बताना. जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज, जस्ट गिव मी 1 minute. So, whatever numbers that I give you are purely the numbers may not give you the correct picture unless and until they are happening. So, मेरा काम है to give you and provide you a kind of basic numbers. I have for y'all is one more company which I will share with you, an interesting company. This data sheet will be provided to you. You can very well go and try to calculate its Z score and Altman score. Can very well go and try to calculate its Z Altman score. The company name is Reliance Industry. I hope you will be able to see this.
देख पा रहे हो? Are you all able to see my Excel file? Yes. Okay. चलिए, this is what sales turnover March 24, March 23, March 21 and March 20. These are the things given to you. इसमें टोटल सेल्स है एंड देन ये सेल्स का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है तुम लोगों को। सेल्स टर्नओवर कितना, तो किस टाइप का सेल्स टर्नओवर है, तो एक है बेसिक सेल टर्नओवर और ऑपरेटिंग इनकम, फिर जॉब वर्क से कमाया गया इनकम, सर्विस इनकम जिसको बोलते हैं, जो कमाया गया, देन अदर इनकम्स जो आई है कंपनी के पास, एंड देन सेल्स। Okay, so this is what the company has made or been able to do it. The actual total sales comes to 5,74,956 crore. Huh? All the amounts are in crores. 5,74,956 crore. So sales दिया है. You want to calculate now? Actually, I wanted to do with you all. इसमें Z score निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन it will take a lot of time. But my major intention was जैसे कि मैंने पूछा था अर्श से कि क्या करवाया था या क्या नहीं करवाया था, वो बता देना। तो अर्श ने, अब फोरकास्टिंग के बहुत सारे वेज एंड मीन्स होते हैं भाई। फोरकास्टिंग कैन बी डन थ्रू मेनी वेज एंड मीन्स, एंड वन ऑफ द वेज एंड मीन्स इज बट ऑब्वियस ट्रेंड फोरकास्टिंग। अब ये तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो ट्रेंड फोरकास्टिंग, सो मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं इसमें। दिस इज माई परसेंटेज का कॉलम, दिस इज माई परसेंटेज कॉलम। दिस इज परसेंटेज कॉलम। So when we take a trend forecasting or trend analysis, when we do, so what we do is we write trend analysis and try to calculate its trend, how the trends are and how the trends are moving, and how it has happened that what is the percentage increase from the base year. We try to calculate it from 2020, which is my first year available to me. And for this first year, I have always my base year as 100%. Your base year percentages will always be 100, irrespective of whatever it can be. So it will be 100. Very simple. And how do we calculate for the next year percentage? How do you calculate for the next year percentage? It's nothing but the current year, that is March 21, divided by the base year, multiplied by 100. So if I have to take the percentage, I'll just do is nothing but equal to, in bracket, the current year divided by my base year, bracket close, multiplied by 100. And I get it as 76%. मतलब कि मेरा जो सेल्स है वो 76% से कम हुआ है। माई सेल्स नॉट 76% से कम हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ जेड स्कोर इन क्लास ऑल्सो विद सम अदर कंपनी। ओ बट ऑब्वियस, यस यस, व्हाई नॉट, यस श्योर, वी विल, ओके, वी विल श्योरली डू इट। दिस इज फर्स्ट फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन। जो ऑनलाइन सेशन होता है, प्लीज डोंट वरी, आई विल कीप ऑन टेकिंग इट ऑफलाइन सेशन ऑल्सो। Means I will take it up in the offline also with this, with a bigger amount, not just a smaller amount. ऑफलाइन ऑनलाइन पे सिर्फ तुमको बेसिक चीजें सिखा दिया जाएगा, बट ऑफलाइन पे जब मिलेंगे तो विल टेक इट एट अ बिगर लेवल्स, ओके, थ्रू अ केस और समथिंग लाइक दैट। अब जहां जहां पे डिवीजन नहीं आ रहा है वो तो बिकॉज उस पे कुछ दिया नहीं था, इसके लिए मैंने निकाल दिया है। अब जिसको जिसको एक्सेल आता रहेगा वो बोलेगा कि ये सब क्यों कर रहे हो सर, वो तो कुछ है ही नहीं, क्यों कर रहे हो अननेसेसरी।
ये फील्ड है अभी। अच्छा, नहीं है। कुछ एरियाज में मैंने बहुत डिटेलिंग नहीं किया है। I've just taken a kind of numbers which were there with me, and that is why I've taken it. So just do not एकदम सिंपल सा ये ट्रेंड एनालिसिस होता है. What does a trend analysis show? I'll explain to you in this. This was my second year. Now coming to the 2022 wala thing. 2020 is my base year. Always remember that base year is 2020. We're not comparing it with 21. We're comparing it with all with 20 only. So equal to, again bracket, 46,620, 466,425 divided by whatever is the amount in 2020 multiplied by 100. So as to get my percentage 127.37. So and I take it up during now. The question arises over here, sir. How are you going to ask an exam? Mind well, my exams are going to be on Excel. मैं तुमको पेन एंड पेपर पे एग्जाम नहीं लूंगा. तो मेरे लेक्चर के लिए तुमको एक्सेल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. Those who know Excel, they'll score more. I'm very openly saying it. So please get your things. Kindly learn about Excel. It's very simple thing. If you require any books for Excel, I have got some books called as Excel for Dummies. बहुत अच्छी बुक है क्योंकि मैंने भी वहीं से सीखा है. I have also learned it from there only. You can do it. Now somebody will say to me that sir ये एक एक करके डिलीट करने से अच्छा जिसको एक्सेल आता है वो करेगा वही. मेरा काम है कि जिसको एक्सेल नहीं आता उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ डू आई गो अबाउट इट. So here also same thing equal to current year divided by my base year, which is again 2000. This is my base year multiplied by 100 and 157. मतलब जो 100% था, जो 100 रुपए का था इन 2020 सेल्स, मेरा 100 रुपए सेल कर पा रहा था, आज बढ़ के वो 157 हो गया है इन 2023. इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया ये. दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड एनालिसिस. This is what is another way, which is called as horizontal analysis of your company's resources. It's called as horizontal analysis. Why it is called as horizontal? क्योंकि मैं horizontal में कर रहा हूँ. This is horizontal analysis that we are doing. How does it help me, sir? What it helps me to understand? It helps you to understand to do your benchmarking based index. For example, March 2020, you were only selling 100 rupees worth of goods. In 2021, you fell to 76 rupees. But obvious COVID here, so that is the reason. But in 2022, you went up again with 127%. And then in 2023, you made 157 rupees. So your 100 rupees has increased to 157 rupees in 2023 in a span of 3 years. So this is what it gives me an understanding of what has happened to my sales. And similarly, when we take up is March 2024. So what has happened to my sales of March 2024? So B4 divided by J4, J4 multiplied by 100. I get my answer as again 157.01. Now again, it gives me an understanding that my 2023 was far better because I was making 157.87, whereas in March 24, I'm making just 157.01. So my sales are declining. But similarly, when I see my sales are declining, I then can go to my cost of goods sold. What happened to my cost of goods sold? This helps me to understand on many things like raw materials, COGS. Cost of goods sold में सबसे पहला important amount होता है COGS का. COGS का raw material का look at the cost 159 rupees and 167 rupees was in 2023. So the expenditure has decreased a bit. So my raw material cost has reduced as compared to things like this. So this is my trend analysis, which
is very important for me to understand my trend. And इसी के basis पे forecasting भी करते हो, right, प्रीतम? Then you will be able to take up forecasting also on this basis. प्रीतम है कि नहीं है? यस सर। इसी के बेसिस पे फोरकास्टिंग निकालोगे फिर कि एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो मिलेगा ना मुझे फोरकास्टिंग निकालने का. हाँ Now this I have taken details where you will get a lot of things as 000. The reason being कि the base amount is either zero or your current amount is either zero. For example, just take the changes of the interest amount. यहाँ पर interest directly दिया गया है 13,430. Whereas here the interest is and nothing, no bifurcation is given. That interest किसके लिए है? ये डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है या इंटरेस्ट ऑन ईसीबी है? They have directly given this interest. Okay. So this is a trend analysis, which is quite an important thing for you. Two things we have learned today. As I said, I don't take too much of your time. In an online session, I know how many of you are seriously hearing me out. In online session, it's just to give you the basic thing for my offline class. कि भाई जब मैं ऑफलाइन में आऊंगा तो आज दो चीजें पढ़ी है. Just to summarize, one which is very important and one which you have already studied. So the one which is very important is but obvious the Z Altman score. Yeah, Altman Z score. This is the most important part. And the other things, so just to summarize, we did was Altman Z score, and we did was the trend analysis. Trend analysis, it can be for PNL, it can be for anything. The formula is current year by base year multiplied by 100 so that you get your percentage. So answer is equal to -%. The next class that we are going to take Altman Z score but obvious हम करेंगे और उसी के साथ we will also do one which is very important for me, dew point analysis. Dew point analysis. Anybody has a brief idea about dew point analysis? ये ट्री डायग्राम बनाता है डू पॉइंट एनालिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी काइंड ऑफ एनालिसिस टू टेक प्लेस. इट्स अ वेरी ओल्ड एनालिसिस, probably 1882 or 1802, I don't know. It was made during those period of time, 1802 या 1882 maybe. It's a very old analysis but a very effective analysis even today. 1802, so nearly 100 years old, more than 100 and 200 years old की theory है ये. 1802 developed by somebody whose name I don't know or I don't remember also. But 1802 में ये develop किया गया था. It gave an idea to how you can calculate through the basis of your assets and earnings, and how your efficiency is being operational efficiencies are calculated. कि तुम्हारा assets, for example, this is generally uh, in asset heavy companies में ये use होता है dew point analysis. Dew point analysis is generally covered in asset heavy companies, those who have putting a lot of money into assets. So then if you're putting a lot of money into your assets, two things should happen. One, your turnover should increase, and other, your profit should increase. So are your assets being operationally utilized properly or not? For example, you want to take machine. Now, if this machine you are taking it, but if you don't use the machine to an effective use, then what is the use of putting these machines? Like when I wanted to present to my college, and nowadays what we do is before they did not consult us on this. I'm sure you have been to the law building, right? उमेश लॉ बिल्डिंग पे तो गया ही है. और लॉ बिल्डिंग के बाहर है ना एक फ्लैप बैरियर लगाया हुआ है, राइट? फ्लैप बैरियर ओपन होना चाहिए ना. तुम लोग जब जाते हो तब ओपन होगा, तुम्हारी स्क्रीन को देखकर वो ओपन होना चाहिए, राइट? यस यस फ्लैप बैरियर वो ओपन होना चाहिए, उसको लगाने का पीछे कुछ तो मीनिंग होना चाहिए कि था कि नहीं. बट अभी तो यूज कुछ भी नहीं हो रहा है उसका. कोई भी आ जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है अंदर. बिना आईडी कार्ड का बच्चा है तो भी अंदर जा सकता है.
मतलब what was the usage of this? We spent some amount, and that time they did not consult us and they just put it. I mean, without even consulting or without understanding for what they are doing it. तो जब हमने पूछा था कि ये क्यों डाला गया है, तो वो बोला कि टीचर्स कभी भी आते जाते हैं, बच्चे कभी भी आते जाते हैं, पता नहीं चलता है व्हाट इज हैपनिंग, कैसे ट्रैक करें हम टीचर्स का। तो हमने बताया कि अच्छी बात है, लेकिन इससे रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा आपका? ये जो चीजें हमने लगाई 10-12 लाख रुपया खर्चा, और इसका मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर निकलेगा करीब करीब एवरी मंथ का लाइट का बिल हमारा कुछ 10 से 12 हजार रुपया बढ़ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको, ये चीज को। सो 10,000, अगर मैं इसको 8-9 घंटा 10 घंटा चालू रखूंगा, आई जस्ट कीप इट ऑन, देन द 10,000 to 12,000 इंक्रीमेंट आ जाएगा ये कॉस्ट में। So why are we doing it? There has to be anything that we do, there has to be some reason about it. And the question here is about finance. When we are spending 10 lakhs to 12 lakhs, 15 lakhs, then there should be a question that what is going to happen next about it. So this is where DuPont stated that when you are doing an important investment in asset, are you deriving a better returns out of it or not? What is the return? Are you taking it? Are you getting the returns? Your operational efficiency is checked through dew point analysis? Am I clear on this, everyone? Yes, sir. Okay, thank you. Any questions you all have? I have this much time only. मैंने पहले ही बताया ना कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इन ऑनलाइन सेशंस, बस इतना बात करना था भाई। मैं 45 मिनट्स बात कर चुका हूँ, अब तुम लोग की बारी। सर एक्चुअली मुझे ये जानना था, आई नो सेम टू जस्ट स्टार्ट हुआ है थोड़ी देर कुछ दिनों पहले, बट सर अभी एग्जाम कब से हो सकते हैं, कुछ आइडिया आपको? मैं चेक हमारा जो करता हूँ, मेरा सेम। थोड़ा टाइम टेबल चेक कर रहा हूँ। तुम लोग की फर्स्ट इंटरनल तो आई थिंक वाज शेड्यूल फॉर 7th, आई थिंक 8th 9th को शेड्यूल थी कुछ। ओके। नहीं, आई लेट एम मी टॉकिंग सी। अबाउट सेम टू, या। सेम टू उसका तो टाइम टेबल फिक्स ही है ना, मैंने देके रखा है। फाइनल एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंडिंग। ओके। उसका आप हाँ, लोग वही प्लीज कंफर्म चेक करना द, था। हाँ प्लीज चेक द, सिर्फ ओनली चेंज इज गोइंग टू हैपन इज इन द इंटरनल थिंग, बट एक्सटर्नल इज ऑन शेड्यूल, देयर वोंट बी एनी चेंज नाउ। जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसीजरल थिंग्स ये चेंज होना पड़ा, बिकॉज ये बीच में I wanted this session to happen more important for you than anything else. Okay? यस सर, Yes, थैंक यू। Trishti madam, that's all for the day. From my side, if you have anything to say, you all are free to say.